Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, President Wajid Ali Khunda Saab and Vashdev. And it is an honor for me to present. I hope this presentation will be some benefit to you people. I don't know how many of you know me or probably have interacted with me in past, but let's try. वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो यही है कि दुआ कि हम सब साइकियाट्रिस्ट जितना ज्यादा हम लोग सर्व कर सकें अच्छे तरीके से लोगों को दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई prescribed clozapine, of course, in Pakistan to lots of people around. और पेशेंट्स को क्लोज़ापीन देना और उनके साथ इंटरेक्ट करना एक एक्सपीरियंस है. I have more than about 172 patients on clozapine over a period of probably a decade, some in Pakistan and some here as well. So both the places. So I feel that my patients do get response to this medication a lot. So I was trying to make this presentation with all Pakistani references. No references taken from abroad. This is all Pakistani references. And if you want to have this presentation, please do share it. I don't have a copyright. You can have this presentation as well. मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता. इतनी खूबसूरत इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये मसाइल तसव्वुफ के मसाइल जो हैं उसमें गालिब की जो ग्रिप थी, जो नॉलेज था, जो उसकी कैपेबिलिटीज थी, देवर बियॉन्ड इमेजिनेशन. और तुझे हम वली समझते कि अगर जो ना बादा खार होता, कि एक बुराई जो है उसकी सारी अच्छाइयों को पीछे छोड़ देती है, जो ना बादा खार होता, कि अगर शराब ना पीता तो हम उसको वली मानते. Most of the time, this is what we are trying to do. Most of the time, what we perceive and do is that we always find negativity in the things around us. As a psychiatrist, I always believe that we should be open, we should be very much bold, and always see positive side of the things rather than the negative side. It's very difficult and passionate job, and if you really are passionate, then becoming a psychiatrist is really helpful to your own self as well. और मैं अक्सर एक मिसाल और भी लोगों को कोट करता हूँ कि आप अच्छे साइकियाट्रिस्ट को देखें, वो कहते हैं जी पागलों का डॉक्टर खुद पागल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे सामने आपको बहुत सारी मिसालें नजर आएंगी. इस स्क्रीन पे भी वासुदेव साहब भी बैठे हैं, प्रोफेसर वाजिद साहब भी बैठे हैं. तो हम पागलों के डॉक्टर हैं, लेकिन हम खुद पागल नहीं हैं. और हमें अपने आप को पोर्ट्रे भी ऐसे करना है कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में लोगों को दिखा सकें कि हम क्या हैं. Mental health is the vital component, and this is unfortunately very neglected and very much problematic. Now, the prevalence of the schizophrenia, this is again quoted from all local journals. The exact prevalence in Pakistan is not well established. अभी रजा और रहमान साहब ने एक स्टडी एपिडेमियोलॉजी की जो पब्लिश की है, उसका डाटा मेरे पास इसमें नहीं है, लेकिन according to a review estimate range from 1 to 2% of the total population. Now, if it is 2% of the population, this means कि 26 करोड़ की अगर आबादी है तो उसका 2% जो है वो तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा नंबर बन जाता है, शायद ज्यादा बन जाता है इससे. So it's a huge number which is there, and it's in our society. Or in one report, approximately 1.5% prevalence of schizophrenia in the population. Now, people don't accept this figure, but actually, this is a known fact.
There is a regional variation according to Nawaz et al. Prevalence estimate differ by province and between rural and urban areas, but generally it is acceptable. It is 2 to 3% in population. Like बलूचिस्तान में 1% है, केपीके में 2% है, सिंध में 2% है, पंजाब में 2.5% है. इट ऑल डिपेंड्स कहाँ पे कौन सी स्टडी कोट की गई है, बट इट्स वेरी फ्रीक्वेंट. हमारे अगेन द मेन कंसर्न होता है कि पेशेंट जब हम तक पहुंचता है तो उसके हालात क्या होते हैं. According to the Global Burden of Disease data, 1990 to 2019, schizophrenia accounts for 0.97% of disability adjusted life years. Now, this figure, 0.97%, is a big figure. और ये जो डैलीज कैलकुलेट होती हैं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी एक चीज है. किसी वक्त अगर मौका लगा तो आपसे से डिस्कस करेंगे कि WHO और ये वर्ल्ड बैंक सारे डैलीज को कैलकुलेट करते हैं कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और ये कैसे हम रिज्यूम करते हैं, उससे हमारा क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या आता है. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट थिंग. Mental disorders, more broadly, are a huge burden. About 10% of Pakistanis are estimated to have a mental disorder per some analysis. And age of onset and demographics is variable as well. But age is mostly acceptable, like all textbook, 15 to 40 years in age. Mostly in females, but both genders are involved, and cognitive deficits are seen as well. A huge number of it. अब द क्वेश्चन इज कि जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, उसके डाटा की बात कर रहे हैं, और अगर हम 2% जनरल पॉपुलेशन में भी लेते हैं, सो 1 करोड़ पे 4,26,000 पे आप मल्टीप्लाई कर दें, नंबर जितना भी बनता है, इट्स अ ह्यूज फिगर. पाकिस्तान में जो डाटा साइकाइट्रिस्ट का अवेलेबल है, जो कहते हैं कि जी 900 साइकाइट्रिस्ट हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील वेरी much compromised in it. I don't know it's a true figure or not, but 900 is a big number. I believe that President साहब ऐसे ज़्यादा बेहतर हाईलाइट कर सकेंगे कि we are not more than 600. If we are just 600 psychiatrists, this means कि 26 करोड़ की आबादी पे हम 600 लोग हैं, और उस हिसाब से हम हर साइकाइट्रिस्ट के हिस्से में कम से कम 1 लाख तो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज ही आ जाएगा, अगर इस फिगर को आप एस्टिमेटेड देख लें. सो आप इमेजिन करें कि कितनी ज्यादा नीड है इस स्पेसिफिक डोमेन में और पेशेंट्स को एड्रेस करने के लिए. Schizophrenia is a significant mental health issue in Pakistan, with estimated prevalence around 1 to 2% through the data, but though the data vary. The burden is non-trivial in terms of disability, comorbidity like substance abuse, metabolic syndrome, cognitive impact, and there are clear socio-demographic and environmental risk factors as well. And public awareness is low, and stigma is a major barrier. More rigorous, large-scale epidemiological research studies are needed so that we know the precise number. But just imagine that if we are 600 and we are seeing this much number of the patients, then how big is the number of the patients that we have to see? And are we really seeing these many patients? I don't think so. I don't think so that in our clinics only we are seeing just the schizophrenia people. There are so many other disorders as well. And on an average, if all the psychiatrists are seeing on an average 30 to 40 patients as well, even then, this number is never a target for us. We have to make sure that this gap is filled. How? I don't know. Now, when we talk about the clozapine, this drug was actually launched in 1970s. Initially, when it was launched, it was a breakthrough in the treatment of schizophrenia long time ago.
and there was a CPMS system, Closeril monitoring system. Or at that time, Novartis Pakistan was maintaining the data. I started my practice in 1995, and since then, just trying to manage that CPMS. Then Novartis disappeared, and the clozapine went to somebody else, and then it changed the whole of the situation. But the good part is that even the Novartis is not there, the Clozaril is available, and the clozapine is available. So there are other brands which are available as well if you really want to prescribe. So there are versions of clozapine which are available in the market. So there are cheaper versions and they are original branded version as well. Now there is always a debate. What is the difference between the cheaper version and the brand version? That is, of course, your discrimination. But I always feel that something is better than nothing. If you have to prescribe clozapine to a patient, and if they are not able to afford it, you can always try the other cheaper brands as well. Because क्लोज़ापीन की कीमत ऑन एन एवरेज 100 रुपए से एक सवा सौ रुपए के दरमियान है 100 मिलीग्राम की टैबलेट की एंड एवरेज डोज which we believe in Pakistani studies is about 230 250 milligrams per day for an average client, according to again one of the journal which is mentioned here. So if we consider this dosage, this means an average Pakistani will be spending, if he gets the branded version of the clozapine, then it will cost him about, say, 200 to 300 rupees per day, which will be, of course, as a whole, if we take out the cost, it will be something around 9,000 rupees per month, which is a little bit more expensive, but again, as I mentioned, there are cheaper versions available, and we are always having an options to prescribe them. Now, why the clozapine is underprescribed? There is a study why clozapine in Pakistan is underprescribed. It says that 25% of the psychiatrists were prescribing clozapine in their practice. Only 25% of the psychiatrists. This means out of 600, or even if we consider it to be 900 psychiatrists, only 250 psychiatrists are prescribing clozapine. Now, why is it so? Is it because it's expensive, or is it because of something else? What I have noticed in my clinical practice is it's because probably we are not given that much knowledge, that much actually encouragement to prescribe this drug under supervision so that there is some outcome, better outcome of the patients. अब क्योंकि हमारे सुपरवाइजर ने आगे हमें ट्रेन नहीं किया कि क्लोज़ापीन कैसे देनी है, किताबी तौर पे तो हम पढ़ लेते हैं कि जी क्लोज़ापीन की डोज यहाँ से शुरू करें और यहाँ पे पहुंचा दें, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो ज्यादातर जो हैं हमारे सुपरवाइजर्स या सीनियर्स, जैसे मैंने इसमें मेंशन किया, ये स्टडी मेरी नहीं है, कि 25% साइकाइट्रिस्ट सिर्फ लिख रहे हैं. सो अगर सिर्फ 25% साइकाइट्रिस्ट लिख रहे हैं, मीन 75% नहीं लिख रहे, तो कहीं पे प्रॉब्लम है. या तो उनको रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर प्रिस्क्राइब नहीं हो रही. So there is some problem with there. Some of the reason is underutilization, like lack of systemic monitoring infrastructure, scarcity of psychiatric services, myths about clozapine, and monitoring burden. Myths about clozapine are probably more relevant than anything else. According to recent WHO AIMS assessment, there are again 600 psychiatrists in Pakistan, which works out to be 0.24 psychiatrists per 100,000 population. Other resources report varying numbers. For instance, the news cited fewer than 500 psychiatrists available in the Pakistan. And according to WHO country report, there are 342 psychiatrists working in mental health facilities, as the last survey of WHO was conducted in Pakistan.
The Pakistan Observer notes only 0.19 psychiatrists per 100,000 people, emphasizing a very low density. Now, which number is correct? It's controversial, and only the President, Wajid Saab, can answer to this question, but the number is definitely less. And out of these psychiatrists, how many are supervising residents to prescribe the clozapine under supervision so that they have confidence in writing the clozapine to the patients? Again, when I started practicing back in 1995, I by myself took initiative to start prescribing clozapine to some of the resistant patients. My confidence built up, and it was again under supervision of one of my senior teacher, mentor, late Professor Harun Rashid Chaudhry Sahab. He was very fond of prescribing clozapine, और उनके बहुत ज़्यादा patients उनके भी थे clozapine के ऊपर. He trusted the drug, and he used to write it very frequently. And when I was seeing him writing it, then I started prescribing it, and he was there. So हमें जब भी कोई क्वेश्चन होता था क्लोज़ापीन से रिलेटेड तो हम उनसे बात करते थे, और वो फिर हमें बता देते कि नहीं, इसका इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, क्लोज़ापीन में जो है वो सीजर इस लेवल पे जाके आ जाता है, तो इस पहले ये ऐड कर देनी चाहिए दवाई. So the confidence of start prescribing the clozapine when you are resident and then afterwards becoming a psychiatrist is more important than anything else. और बहुत सारे हमारे अनफॉर्चुनेटली साइकाइट्रिस्ट या इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे प्रिस्क्राइब क्योंकि नहीं होती तो रेजिडेंट को एक्सपोजर नहीं होता और फिर वो लिख भी नहीं पाता. Workforce size, according to a recent evaluation using WMS, there are again 4,429 mental health professionals in Pakistan, which corresponds to 1.91 per 100,000. Now, I was surprised to see the data here. और इस डेटा में एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड सोशल वर्कर्स तो चलें, एक चीज है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आप अगर ये फिगर्स ठीक हैं जो मुख्तलिफ जगहों से कोट हुई हैं, तो देर आर 600 साइकाइट्रिस्ट एंड देर आर 3,000 साइकोलॉजिस्ट. Now this number is huge. It's a big gap. There are 600 psychiatrists and 3,000 psychologists. So my question is, are psychologists able to diagnose resistant schizophrenia? And this question always intrigued me for a number of reasons. One, because they are not prescribing medication. So are they able to assess resistant schizophrenia? Two, if they are able to assess resistant schizophrenia, are they doing something about it or making somebody to prescribe it to the patients? I don't know. If you consider this figure to be correct, and if we have the help of the psychologist in diagnosing and managing the schizophrenia, then the clozapine can be prescribed well. Otherwise, it won't be. So yeah, this is again a very tricky situation. Again, screen पे काफी बड़े-बड़े चेहरे, बड़े-बड़े नाम बैठे हुए, so they can highlight further and we can talk about it later on. So the clinical psychologists typically have the theoretical and the clinical training to assess severe mental illnesses like schizophrenia, especially if they have masters or the PhD in clinical psychology. According to the Liverpool University report, there are multiple training institutes, for example, in Karachi, Lahore, that run masters or higher degree programs. But the quality and the standardization of the training vary. The Liverpool report notes that no national regulatory body for clinical psychology and considerable variation in clinical training pathways is there available in Pakistan. And according to WHO AIMS report, only 72% of the trained psychologists are actually practicing in Pakistan. Now, 72% is a good number if we consider this to be a number.
Now, myths about the clozapine. One thing is always there. People are afraid to prescribe it as they feel that maintaining the CPMS, closeral blood monitoring system, will be a chaos, will be difficult. मरीज ब्लड टेस्ट नहीं करवाता, अगर ब्लड टेस्ट करवाता है तो उसको हम मॉनिटर नहीं कर पाते, उसकी रेगुलरिटी नहीं होती, और फिर वो पेशेंट के फॉलो अप में मिस हो जाता है. I don't think so. There's any problem with that. Uh, Recently, I may be wrong, I heard that in Pakistan the CPMS is absolutely abolished. Now the clozapine is available in the general pharmacy like any other drug which is available over the counter, which is again a very big challenge and a problem as well. Because if this drug goes to somebody's hand who is not having an experience of prescribing clozapine, then it will be another complication rather than benefiting the patients. So it's a tricky problem. Stigma around severe mental illness and powerful drugs, both patients and families may be wary of clozapine level treatment. Now, this is again a very big myth in it. The clozapine तो आखिरी पेच है, दाव पेच है जो एक साइकियाट्रिस्ट अपने मरीज के साथ खेल सकता है, which is again wrong. This is not true. Unfortunately, I have seen patients who are resistant to resistant schizophrenia, means who were not responding to clozapine, and they had to be given more than clozapine and combinations and other medications to stabilize them. And I'm sure other psychiatrists must have seen that situation as well. So there are situations where you have to do polypharmacy in some percentage of patients who are resistant to resistant. But who will diagnose and who will label that? That's a questionable thing. And I always am very much careful about mentioning it about it. Side effect profile. Actually, in most of the patients, the two or three major problems like agranulocytosis and thrombocytopenia, platelet count low हो जाएगा, WPC count low हो जाएगा. That is the main risk. Or if we monitor it for 2, 3 weeks and 4 weeks, and if it is stable, then of course the chances of it goes down over the period of time. So initially you need a weekly blood test, or maybe till the time you are escalating the dose to an appropriate therapeutic level, wherever you want to take it. Like average dose in Pakistan about 250 milligrams per day. और अगर आप उसको 250 milligrams तक ले जाते हैं, यहाँ पे मैं किस्सा सुनाऊं. जब when I started practicing, तो मेरे एक अफोर्डिंग क्लास का पेशेंट था जिसको रेजिस्टेंस स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस था, और मैंने उसकी माँ को बड़ा इंसिस्ट किया कि इसको क्लोज़ापीन देनी चाहिए, और उन्होंने नहीं मुझे प्रिस्क्राइब करने दी, जस्ट बिकॉज कि नहीं वो ब्लड मॉनिटरिंग करवानी पड़ेगी, और सुना है जी इससे तो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाता है. उस वक्त इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, वो खातून किताबें पढ़ के बोलती थी. अब तो खैर इंटरनेट पर भी लोग देख लेते हैं. वो यूके ले गई उस पेशेंट को, और वहां पे साइकाइट्रिस्ट ने विद इन 3 वीक्स उस पेशेंट को 400 मिलीग्राम ऑफ क्लोज़ापीन पे लेके स्टेबल करके चौथे हफ्ते घर भेज दिया लाहौर वापस. सो 4 वीक्स के लिए वो गया, जो भी उन्होंने पैसे खर्च किए यूके जाने में और ट्रीटमेंट करवाने में, और वापस ले आए, और 400 मिलीग्राम ऑफ क्लोज़ापीन पे साइकाइट्रिस्ट ने स्ट्रेट उसको ले गए. When he came back to Pakistan and I started following him up, unfortunately, he developed a seizure within 2 weeks after he returned to Lahore, which is one of the side effects of the clozapine, right? So, इतनी तेजी से इतनी जल्दी जब clozapine within 3 weeks 400 milligrams पे लेके गए, तो वो सीजर एक्टिविटी हो गई. अब वो सीजर एक्टिविटी इसलिए हो गई कि उन्होंने बाकी सारी दवाइयां बंद कर दी, उसमें एंटी कन्वल्सेंट भी था, या क्लोज़ापीन से हो गया, आई डोंट नो. But then we had to manage the seizure. We have to reassure the family that it's nothing concerning, things will be okay. इसका mental health इसकी अच्छी रहना जरूरी है. And he was stable afterwards on 300 milligram of clozapine for a long period of time.
So there are definitely problems, side effects, which are experienced in day-to-day life, but they are manageable. There is nothing catastrophic. Out of 172 patients I have on clozapine, there were only two patients who developed side effects where I had to stop the clozapine or change it. One of the patient, उस्मान यहाँ पे हैं, शायद इनके सामने का वाक्य हो। सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे एक पेशेंट एडमिट हुआ था, उसको हमने क्लोज़ापीन दी और उसका प्लेटलेट काउंट फॉल किया और फिर वी हैड टू स्टॉप इट। और दूसरा पेशेंट एक और मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसको मैंने दिया और वो उसका प्लेटलेट, सो out of 172 only two patients, and even the general figures about this agranulocytosis and the platelet related problem is reported to be 1%, so which is less than 1%. So इतना कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है कि हर पेशेंट को ये हो जाता है। होता है, मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, लिखी जा सकती है। Overestimation of the risk is common. Prescribers may overstate how likely or severe will be the side effects. अब जब हम SSRIs प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट को कभी ये नहीं कहते कि इस दवाई के खाने से आपको नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, अनईजीनेस होगी, हेडेक हो सकती है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मैदा खराब हो सकता है। जनरली ये साइड इफेक्ट्स हम पेशेंट को नहीं बताते। हम उसको कहते हैं जी ये दवाई है, सेफ है, अच्छी है, खाएं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्लोज़ापीन के केस में आके हम पेशेंट को एक लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स देना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, इस दवाई से ब्लड भी टेस्ट होना है, उसको मॉनिटरिंग भी करनी है, उससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, विच क्रिएट्स अ स्केयर इन द फैमिली and which is unfortunately a problem. And this is what I have seen. So when I have to prescribe clozapine, I always reassure that if he's taking currently 3 or 4 medications on a this doses, combining the cost together is about say 600 rupees per day. I will try to cut it down to one medication only, and it will be the cost will be about 300 rupees per day, which is manageable as compared to the long list of the medications the patient is taking. So this is what I feel. You have to craft the words which you have to communicate it to the family, how the things can be going in forward with the patients rather than scaring them about things. Monitoring requirements and infrastructure. That is true that in Pakistan, people, again, CPMS is practically non existing now, and the whole of the data which was available for CPMS is gone. Here in Canada, yes, we still use CPMS और एक सेंट्रलाइज्ड लैब है, और वो जिस पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब की जाती है क्लोज़ापीन, the patient's prescription goes to those people and they are responsible for managing. So it's not my responsibility that I have to monitor the CBC और उसके लेवल्स को मुझे देखना पड़ता है, मुझे उसको नहीं देखना, वो क्लोजरेल वाले खुद करते हैं। ब्लड टेस्ट भी वही करते हैं। मैं एक दफा ब्लड टेस्ट लिख देता हूँ जी, वीकली ब्लड टेस्ट कराना है फॉर क्लोज़ापीन। लैब पीपल नो कि क्लोज़ापीन की लिए ब्लड टेस्ट होना है तो कितने अरसे बाद होगा, तो पहले वो वीकली होता है, उसके बाद फिर वो 2 वीकली पे चला जाता है, फिर वो मंथली पे चला जाता है। मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की ईमेल आ जाती है कि अब आपका पेशेंट जो ना वो क्वालिफाई करता है 2 हफ्ते के ब्लड टेस्ट के लिए, अब आपका पेशेंट क्वालिफाई कर गया है 4 हफ्ते के ब्लड टेस्ट के लिए, अब आपका पेशेंट क्वालिफाई कर दिया 6 हफ्ते के ब्लड टेस्ट के लिए, विच इज फाइन फॉर मी। आई जस्ट हैव टू कीप अ चेक ऑन इट। Otherwise, in Pakistan, that unfortunately is a problem. But it can be formulated if we want to. So, जहां पे हम और बहुत सारे काम करें, वहां पे ये काम भी डुएबल है अगर हम करना चाहें तो। Cost of the drug is, again, as I mentioned earlier, I don't think so. It's that expensive, even if the branded one is taken, considering the average dose that we have to prescribe to the patients, is the cost is not too much. The only thing I still emphasize is that we need our supervisors
to definitely train the residents how to prescribe clozapine, how to monitor it, so that they should build up the confidence in writing it to the patients where there is a need. And of course, resistant schizophrenia is definitely one of the things that is needed. Right. Delay in initiation. Now, this is a common problem. Most of the time, we see patients coming with schizophrenia for years and years. और पाकिस्तान में तो ये चीज़ अगेन इट्स वेरी कॉमन। पेशेंट आपके सामने आके बैठेगा, उसके हाथ हिल रहे होंगे, दांत सारे खराब होंगे, स्मोकिंग कर करके उसकी उंगलियां जली हुई होंगी, और बाल उसके खराब होंगे, सेल्फ हाइजीन खराब होगी, एंड इट्स अ कॉमन प्रेजेंटेशन देयर। और उस स्किज़ोफ्रेनिया को, रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया को, स्पेशली इन द इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ सेटिंग्स जहाँ पे बड़े बड़े सेटअप्स हैं, वहाँ पे हम क्लोज़ापीन की कंसिडरेशन को बिल्कुल नहीं लेके आते। और यूजुअली मीन एज फाउंड टू बी prescribing clozapine is 6.2 years between the diagnosis and treatment resistant schizophrenia. Ideally speaking, internationally, the standard time is 9 months between the onset and declaring it resistant. It's 9 months to 2 years. In Pakistan, it's 6.2 years or more, which is a big number. And such delays may worsen long-term outcomes and reflect systemic inertia, clinical clinician hesitation, or slow referral process. Of course, referral process is not there in Pakistan, so it's not a problem. Families or patients may resist clozapine because of the side effect profile, concerns about adherence, blood testing, demands, frequent clinic visits, transportation, logistics, and other issues related to it, poor continuity of care of service, fragmentation in some settings, community support or consistent monitoring available is not there, and health system constraints, lack of coordination, lack of regulation, and shortage of specialized services. Again, how to solve the problem? To solve the problem, there is only one response to it. One, we have to educate and train our residents so that they know what to do and how to do. We should train them how to monitor and try to make sure that if they can contribute or we can contribute for monitoring infrastructure, that will be great. Financial support is usually available in public sector to lots of patients available. ज़कात फंड मिल जाता है, अस्पताल से दवाई मिल जाती है, कोई ना कोई रिसोर्सेज इधर उधर से जनरेट हो जाते हैं। और जो चीपेस्ट क्लोज़ापीन ब्रांड मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, दैट कॉस्ट अबाउट ओनली 12 रुपए पर 100 milligram. I don't know how effective it is because I have never prescribed it. बट ऑफ कोर्स इट्स अवेलेबल। मुझे ये भी एक वाकया याद है कि पाकिस्तान में सर्विसेज हॉस्पिटल में मैं काम करता था, तो हमने क्लोज़ापीन मंगवाई और वो क्लोज़ापीन हमें अस्पताल वालों ने दे दी। अच्छे ज़माने थे, और जो हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने बहुत हेल्थ में पैसा पोर इन किया था, जिससे बड़ी अच्छी दवाइयाँ उस वक्त अस्पताल में मिल जाती थी। तो क्लोज़ापीन भी आ गई। 6 महीने बाद वो कुछ प्रॉब्लम हुई और वो क्लोज़ापीन जो है वो क्लोज़ापीन के नाम से नहीं आती थी, किसी और नाम से आनी शुरू हो गई। ऑल्दो कि उस पर मैंने साइन नहीं किए थे, लेकिन वो उस नाम से आनी शुरू हो गई। सो आई वेंट बैक टू द फार्मासिस्ट और मैंने कहा जी ये दवाई का नाम चेंज हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी ये सस्ती है तो हमने इसलिए ले ली। खैर एनीवेज वी प्रिस्क्राइब दैट क्लोज़ापीन टू द पेशेंट, और हमारे तमाम वो पेशेंट जो 200 पे, 300 पे, 400 पे स्टेबल थे, वो सारे रिलैप्स बैक करने शुरू हो गए। जहां हम 400 देते थे वहां हम 600 देनी शुरू हो गए। सो ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली भी आता है कि समटाइम्स द चीपर ड्रग्स दे डोंट हैव द सेम अमाउंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी as the original drug. Now that is a complication, yes,
but options are available. Cheaper drugs are available. Policy and health system reforms, ये तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही कर सकते हैं. Patients engagement, research, data collection. अनफॉर्चुनेटली क्लोजपीन का जो सीपीएमएस मॉनिटरिंग सिस्टम का डाटा था, दैट वाज अ वेरी गुड डाटा. उसमें वो पाकिस्तान से स्पेसिफिक डाटा अवेलेबल था. वो अब नहीं है. अब अगर किसी को करना है तो उसको अपना ही डाटा करना पड़ेगा, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होगा. सो दैट इज ऑल फ्रॉम मी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम willing to respond to it. Nasir, thank you very much for such a liberative and personal experience in Pakistan. I agree with you that this is actually underused drug in Pakistan, and of course, it's due to the side effects of granulocytosis. And one thing, if you do the before starting क्लोज़ापीन, अगर हम सिखाएं अपने जूनियर्स को कि वर्क थ्रू करें और उसका ईसीजी, पीएमआईज और साथ मतलब मोस्ट प्रॉब्ली कुछ जैसे प्रो कन्वर्सियो आपने एक पेशेंट का बता दिया, तो दिस इज वंडरफुल वंडरफुल ड्रग विद ऑफ कोर्स अगर आपका ईसीजी प्लस ईईजी, सीटी स्कैन or blood monitoring agar ho. So this is a wonderful drug. And thank you very much once again. Now I invite all the trainees to, if there is any queries about the use of इसमें clozapine. Ji, छोटी सी please. दो तीन चीजें और ऐड कर दूं. अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है. Lots of patients, female patients, people ask me the question, female patients है, क्लोज़ापीन दे दें. आपको जब स्टैब्लिश हो गया कि उसको रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया है, दूसरी दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और क्लोज़ापीन आपको देना मजबूरी है, तो दे. यूजुअली कभी कभी ऐसे इत्तेफाक भी होते हैं. ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं पॉसिबल नहीं है. मेरी एक पेशेंट थी, फीमेल पेशेंट थी. उसको क्लोज़ापीन हम दे रहे थे, और वो 400 मिलीग्राम क्लोज़ापीन पे बहुत स्टेबल थी. मुझे अभी भी वो खातून याद है. और वो 400 मिलीग्राम क्लोज़ापीन खाती रही, और फिर वो उसके बाद वो डिसअपियर हो गई 6-8 महीने के लिए. सो जब 6-8 महीने के बाद वो वापस मेरे पास आई, तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग. तो मैंने कहा कि तुम क्लोज़ापीन दवाई खा रही हो, तुम्हें समझाया था, बताया था कि प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तो फिर भी जो है वो प्रेगनेंसी तुम्हारी हो गई है 7वें महीने, और 7th मंथ पे आई वो. तो कहती जी डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं चला. नो, दिस वाज सरप्राइजिंग कि 7वें महीने प्रेगनेंसी भी उसको पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट होगी. बहरहाल, द पेशेंट वो gave birth to a baby which was definitely a normal baby, so I was comfortable afterwards once she delivered a baby. but ये भी पाकिस्तान में होता है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब ये दवाई खा रही हो तो अब मजीद बच्चे नहीं करना, तो वो भी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. बट अगेन, सिर्फ इस चीज को कंसिडर में करते हुए रखते हुए ये नहीं हो सकता कि हम पेशेंट के साइकोसिस को अनट्रीटेड जाने दें, या पार्शियली ट्रीटेड जाने दें, या रेजिस्टेंट केस में कन्वर्ट कर दें. सो दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी. यस प्लीज. सॉरी, एनी क्वेश्चंस? यस. Sir, I have one question. श्योर. सर, ये अभी रिसेंट न्यूज आई है कि एफडीए ने अप्रूव किया है कि फरवरी 24 से आरईएम सिस्टम खत्म कर रहे हैं क्लोज़ापीन का. ये उस्मान, पाकिस्तान में न्यूज आई है. अच्छा, ओके, यहाँ नहीं आई. ऑलराइट. और एक सेकंड, जो रिसर्च में लिखा जा रहा है कि क्लोज़ापीन से जो हाइपोमोटिलिटी होती है और वो इस्कीमिया या परफोरेशन कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, उसका 10 टाइम ज्यादा मोर्टेलिटी रेट बताया जा रहा है. आपके एक्सपीरियंस में, या हैव यू सीन सच केसेस जहां पे ऐसे इश्यूज हो? मैंने जो रेयर साइड इफेक्ट्स क्लोज़ापीन के देखे, उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ 2 पेशेंट को मेरे ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट में मसला आया कि मैंने दवाई मुझे डिसकंटिन्यू करनी पड़ी. आउट ऑफ 172 आई हैव. एंड देन एक पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुई,
पेशेंट प्रेजेंट केम, एक पेशेंट मैंने फीमेल की आपको मिसाल दी, प्रेग्नेंट हो गई और वो आ गई, लेकिन वो शुक्र है कि वो डिलीवर हो गई। एक पेशेंट मेरे पास स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, रेजिस्टेंस पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, he came and he sat in front of me, and I felt that there was something wrong with him. We got his ECG done. I was not comfortable with the idea. I still felt that there is something wrong with him. We got his echocardiogram, तो उसको cardiomyopathy निकल आई. So that is one of the rare side effects of the clozapine. लेकिन again, if you are vigilant, पेशेंट चाहे आपके पास 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आए, अगर आप मॉनिटर कर रहे हो तो हो जाता है। ये जो न्यूज़ की जी वो क्लॉजरल मॉनिटरिंग सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में नोवार्टिस ही खत्म हो गई, तो वो इसलिए उन्होंने कहा जी एफडीए जो भी काम लगाना हो एफडीए के जुमरे में लगा दें। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई स्टिल फील कि यहाँ पे तो हमारा वही सिस्टम मैनेज कर रहा है, सीपीएमएस क्लॉजरल मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है। बहुत सही, खूब। थैंक यू। एक्चुअली जो कंकरेंट डिजीजेस अगर हो, जैसे अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया विद सीजर डिसऑर्डर हो, उसमें ख्याल रखना चाहिए। डिमेंशिया में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो और जैसे अगर किसी को दियाबितीज है विद स्किज़ोफ्रेनिया, तो ये तीन और भी मतलब जो एक साइड इफेक्ट के प्रोफाइल में हमने ये ऑब्जर्व करने हैं। जी, अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का। हेलो। Am जी I जी audible? नोमान, जी नोमान। Assalamu alaikum, sir. My name is Dr. Noman. Currently, I am practicing as a R2 trainee in Civil Hospital, Karachi. Am I audible clearly? हमारे अपने ही जो है वो म्यूट पे है। Acha, sir, I have a question regarding clozapine. The main barrier which I believe in our setup is the regular blood test with the patient and the family do not follow properly. वो एक दिन आते हैं क्लोज़ापिन, 2 हफ्ते 3 हफ्ते ठीक होता है पेशेंट, एंड देन वो महीनों गायब हो जाता है। तो जब ब्लड टेस्ट फॉलो नहीं होगा तो अगेन वो सीरियस साइड इफेक्ट रिगार्डिंग द एग्रेनोसाइटोसिस एंड अदर, वो हम फॉलो ही नहीं कर सकते। तो इस केस में भी एक बैरियर बनता है हमारे लिए बिफोर थिंकिंग अबाउट क्लोज़ापिन। डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये बैरियर है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की अपनी सोच है। पेशेंट को यूजुअली अगर आप थोड़ा सा अगेन केयरफुली मॉनिटर कर लें तो मेरा नहीं ख्याल ये प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया कि मेरे सिर्फ 2 पेशेंट्स को ये सारी प्रॉब्लम हुई है। जब भी पेशेंट मेरे पास आता है फॉलो अप के लिए, द फर्स्ट थिंग आई आस्क देम कि जी सीबीसी लेकर आना अगली दफा, और सीबीसी का फॉर्म पहले ही हम उनको पकड़ा देते हैं पाकिस्तान में भी कि जी सी, अगर कोई पेशेंट ऐसा आ भी जाए कि 2-3 महीने के बाद आया है, 4 महीने के बाद आया है, दवाई खा रहा है, बेहतर है, स्टेबल है, तो जब वो आता है फॉलो अप पे तो सीबीसी टेक्स हार्डली 10 मिनट्स। आप उसी वक्त उसको कहीं भेज दें, लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के देख लें। हम इसको एक हैंडीकैप बना रहे हैं, हैंडीकैप है नहीं। अब जैसे अभी उस्मान साहब ने मेंशन किया कि जी वो सीपीएमएस पाकिस्तान में अबॉलिश कर रहे हैं, एफडीए ने ये कहा है। अगर आप वो करते हैं तो फिर तो आपको सीपीएमएस की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो आप तो वैसे ही कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में अब क्लोज़ापिन दवाइयां मुख्तलिफ नामों से फार्मेसी पे वैसे भी अवेलेबल है। Again, I'm not saying that it is justified. I'm not saying that it should be done. But what I'm saying is that don't make it an excuse not to write it. Because if you are careful, if you are vigilant, if you really want to have a good follow up with the patient, I think we can always find ways to do it. जी, फरोख है खान So, साहब, आप कुछ पूछना हाँ चाह जी। रहे हैं। नसीर भाई, आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद क्लोज़ापिन और उसके बैरियर्स जो यूजुअली थे। एक तो ये कि जो आपने साइड इफेक्ट प्रोफाइल के साथ बताया, मेरे भी तकरीबन 3-4 मरीज, 3 बल्कि 4 के करीब मरीज ऐसे थे जिनको, अब मैं आउट ऑफ नहीं बता सकता, मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा था, जिनको जो है वो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हुआ एंड हैव टू स्टॉप इट।
और एक था जिसको कार्डियोमायोपैथी, जैसे आपने कहा कि वो हुई, वो मैं नहीं ट्रीट कर रहा था, कोई और ट्रीट कर रहा था। मेरे पास से वो चला गया था, बट ही डेवलप कार्डियोमायोपैथी। ये तो ये दो साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ छोटे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो दूसरों के साथ भी हैं, लेकिन इसके साथ भी काफी है, जिसके अंदर सिडेशन है, सिडेशन, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, राल का बहना, सैलरी है, इसमें कुछ चीजें इसमें बहुत कॉमन है जिनसे लोग इरिटेट होते हैं। ये तो आई थी थिंक वी जो थोड़ी लास्ट सी फॉर साइड इफेक्ट वाली बात है। देखा कि जी सुधर हुआ है, वी जस्ट एडेड एपीवैल सोडियम डाइविलप्रिक सोडियम, वी जस्ट एडेड एंड इट वाज फाइन। अब बात आ गई, जो मुझसे पहले उन्होंने स्पीकर ने कहा, नसर भाई नहीं मानते, वो थोड़े फॉरेनर हो गए, कि बाहर के आदी हो गए। यहाँ पे ये इट्स अ रियल प्रॉब्लम, यानी कि इट्स अ रियल प्रॉब्लम के ब्लड मॉनिटरिंग। पहली बात तो ये कि हमें ये डिसाइड करना है एज अ साइकाट्रिस्ट कि ब्लड मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, इस बजाय इसके कि सीपीएमएस है या नहीं है। सीपीएमएस खत्म हो चुका है क्लोजर के जाने के बाद, और अब क्लोजर जब से नोवार्टिस गई है। अब बात यह है कि हमने करना है या नहीं करना। अगर ये जरूरत है तो फिर जरूरत है, फिर हम सबको सीपीएमएस का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें खुद करना चाहिए। और अगर जरूरत नहीं है तो फिर दूसरी बात है, फिर हम हर एक के अपनी विल के ऊपर है, वो कब करना चाहता है, कितने अरसे बाद करना चाहता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में मोर तहकीकात की जरूरत है, या हमें एक बारे में क्लियर गाइडलाइन की जरूरत है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जैसी प्रैक्टिस में मैं थोड़ा, मेरा फीस स्ट्रक्चर कम है, और क्योंकि आर्मी में था पहले, फिर बाद में भी फीस स्ट्रक्चर कम रहा, तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं दे कम फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज, एंड दे आर यूजुअली मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप। अब उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उन लोगों के लिए ब्लड मॉनिटरिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तो बार बार समझाने के बावजूद, ये जो कह रहे हैं बार बार समझाना, बार बार भी आप उनको समझाएं कि यार ये आपके लिए ब्लड सीपी कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए बाद दफा मुश्किल होता है, बाद दफा कॉस्ट की वजह से। जैसे जैसे आप कह रहे हो कि ब्लड सीबीसी का, अब कोई ब्लड सीबीसी का फॉर्म नहीं मिलता अगर जब तक कि आप डिमांड ना करें क्लोजर हिल वालों से। अब आप खुद लिखते हैं पहली दफा में कि पहले मुझे ब्लड सीपी दिखाओगे तो मैं शुरू करूंगा। तो ये तमाम मसाइल हैं, ये बैरियर है बहुत बड़ा ब्लड मॉनिटरिंग वाला। दूसरा जो एक बैरियर है वो यही कि मरीज को जो है वो, आप यूजुअली जैसे आपने कहा कि हमारी आदत होती है कि हम साइड इफेक्ट्स नहीं बताते हैं आम हालात में इतने, या जब तक वो पूछे नहीं, या थोड़े बहुत बताते हैं। इसमें चूंकि आप क्लियरली साइड इफेक्ट बताते हैं तो अलार्म्ड हो जाता है कि कहीं ये क्लोजर खाने से ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। और क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसमें और डेंगू वाली अलामात में, यानी कि ब्लड वाली पिक्चर के अंदर फर्क नहीं है, वो थोड़ा घबरा जाता है। आप उसको समझा देते हैं कितना परसेंटेज है, मैं हूं इधर देखने के लिए, और जिस वक्त थोड़ा सा भी हुआ तो हम बंद कर देंगे दवा को, देन ही गॉट सेटिस्फाइड। बाद दफा क्लोजर की, जैसे इन्होंने कहा, बाद दफा क्लोजर को कोमॉर्बिड भी करना पड़ता है, लेकिन जब वो मतलब एक से ज्यादा मेडिसिन देनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें फिर हमको ये ख्याल करना चाहिए कि हम कौन सी दे रहे हैं। हम कोई ऐसी और तो नहीं दे रहे, ऐड कर रहे कि जो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करती हो या एपिलेप्टिक फिट को वो करती हो। मेरे ख्याल में उसमें जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पहले से जो शुरू की है बहुत ज्यादा, जो मुझे बेहतर लगती है वो रिस्पेरिडोन ही है। तो लेकिन इसके अलावा और भी दवाइयां हैं जो शायद की जा सकती होंगी, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो या मैं कम कर रहा हूँ। तो ये बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ये ये मसाइल हैं नसर भाई। जी बिल्कुल है। मंसूर अहमद कोई साहब। कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि ये मसाइल हैं, लेकिन मसाइल तो सर इस पाकिस्तान पे में थोड़ा और भी बहुत से बताइए हैं। सर सर। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारा डाटा जो है ना, जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी डाटा है, ये कैनेडियन डाटा नहीं है। कैनेडियन डाटा बहुत डिफरेंट है, ठीक है। सो उसको कंसिडरेशन में रखें। और ये सारे मसाइल हैं, लेकिन ये सारे हो सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो फिर बहाने बने।
अच्छा जी अच्छा मंसूर नसीर भाई, अहमद। इसमें एक और बात भी है, इसमें टाइम एक और बात है, मैं एक बात सिर्फ इसमें और ऐड करूंगा। एक और बात यह है कि जहां पे ये प्रैक्टिस बहुत इजी की जा सकती है, वहां पे तो अभी तक हम सैरिनेस दे रहे हैं। जैसे जो लॉन्ग टर्म हमारी फैसिलिटीज हैं, जैसे फाउंटेन हाउस है, जैसे कारवाने हयात होगा, जैसे दूसरे हैं, जहाँ पे आप ब्लड मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप साइड इफेक्ट भी देख सकते हैं, वहां पे अनफॉर्चुनेट, और वहां पे होते भी ज्यादा रेजिस्टेंट केसेस हैं, तो वहां पे तो ये चीज इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। ये आपने अपने सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया ना फरूक भाई, कि अब आप खुद सोचें कि रेजिस्टेंस कहाँ है। फिर रेजिस्टेंस तो हमारे अंदर ही है ना, लिखने में। अदरवाइज पेशेंट में तो रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो खाने को तैयार है। नसर भाई, मेरे ख्याल में वहां पे जो प्रॉब्लम है इन इंस्टीट्यूशंस में, मैं जो देखता हूँ प्रिस्क्राइब दैट इज करने कि वाले की कमी है। दे वांट टू गो टू अ लो पे, लो लो नहीं, कॉस्ट मेडिसिन, लो और कॉस्ट वो मेरे ख्याल क्लोजरिल में भी इसीलिए बहुत, क्लोजर पे नहीं जाते। क्लोजरिल वहां पे भी सस्ती अवेलेबल है, एंड आई एम श्योर अवेलेबल है। लिखने वाले की कॉन्फिडेंस की कमी है। नासिर, लास्ट क्वेश्चन ये मंसूर सर अहमद है डॉक्टर साहब। सर जी लास्ट मंसूर। क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर जी जी, मंसूर। जी 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 बल्कि जी। उसके बाद जी गुलाम अस्सलाम रसूल वालेकुम साहब भी सर, पूछेंगे। मेरा नाम जी मंसूर। डॉक्टर मंसूर बस शॉर्ट सा आंसर, अपनी जो आप कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स नहीं, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। इट्स ऑलरेडी 10:30 हो चुका है। या Yes, sir. Sir, that थैंक यू। thanks a lot for the this wonderful presentation. और second ये कि sir, my name is Dr. Mansoor Ahmed and I am a resident psychiatrist at LRH Hospital, Peshawar. Sir, हमने schizophrenia की रजिस्ट्री माशाल्लाह स्टार्ट की है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान। तो हमने 106 पेशेंट पेशावर से रजिस्टर की है, जिसमें हमारे साथ 90 पेशेंट वी हैव स्टार्टेड ऑन क्लोज़ेपिन। फिर जो सर ने बैरियर डिस्कस की ना, वो बैरियर हमारे साथ थे, तो हम डॉक्टर मुख्तार हजीम साहब हो गए और डॉक्टर इकबाल अफरीन साहब, प्रोफेसर साहब, तो हमने फिर डिस्कस की, फिर हमने प्लान बनाया। तो हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स आते हैं, तो पेशेंट को फिर हम कंसल्टेशन को हम जाके शी विल कम टू दी बेड सर्टिफिकेशन एंड सेट इस फिर की बात आती है, वासुदेव, तो फिर हम ये प्रोवाइड गुलाम रसूल साहब को बोलने दे। गुलाम रसूल साहब। थैंक यू। मैं अप्रिशिएट करता हूँ नासिर साहब और सारे कुलीग्स को भी। शॉर्ट क्वेश्चन है, आजकल कोई नई स्टडी अवेलेबल है, कंपैरेटिव स्टडी क्लोज़ेपिन और कोई नेवर एंटीसाइकोटिक्स का, ऑनेस्टली स्पीकिंग अवेलेबल, स्पेशली साइड इफेक्ट्स को नजर में रखते हुए? अवेलेबल तो डेफिनेटली मेरी नजर में अभी एटिपिकल्स की और इसकी कोई बिल्कुल 2 साल वाली तो कोई स्टडी मेरी नजर से नहीं गुजरी। ये जो मे बी वो आजकल जो दो न्यू आई है, ये दो जो कि मार्केट में है, उसके बारे में कोई ऐसा कंपैरेटिवली है क्लोज़ेपिन? कैरिप्राज़िन और उसके साथ कंपैरिजन में जी हाँ, उसकी। नहीं नहीं, डेफिनेटली क्लोज़ेपिन के साथ कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर नसर सईद फॉर अ वंडरफुल लेक्चर। काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, प्रोफेसर गुलाम रसूल, प्रोफेसर अब्दुल